We'll continue with integrating factor type 3. So type 3 looks like dy by dt plus py is equal to q. Integrating factor is e raised to integration p dt. Now my question will be something like this: 1 plus t dy by dt minus ty is equal to 1. So integrating factor become e raised to minus integration t dt, which is e raised to minus t square by 2. So this becomes e raised to minus integration t square by 2. Q is up. One more thing. Sorry. In all the types that we have done, the coefficient of dy by dt needs to be 1. So since dy by dt needs to be 1, this will become minus t upon t plus 1 into y is equal to 1 upon t plus 1. So p will become minus t upon t plus 1. So integrating factor will become e raised to integration p dt, which is e raised to integration minus t upon t plus 1 dt. I'll take minus outside. This will become t plus 1 upon t plus 1 minus 1 upon t plus 1. Okay. And if I simplify this further in integration 1 minus 1 upon t plus 1, which will become e raised to minus x and plus, it will become ln t plus 1 minus t. Okay. So e raised to minus t into e raised to ln t plus 1, which will become e raised to minus t into t plus 1. So this is your integrating factor. And now when I solve it further for integrating factor, it becomes y into integrating factor is equal to q into integrating factor dt. Yes, this is your integrating factor. So y into e raised to minus t into t plus 1, because this is the integrating factor minus t upon 1 plus t, minus t upon 1 plus t. So dy by dt plus py is equal to q dy by dt, and this will become is equal to integration q. This is your q ka value, which is 1 upon t plus 1 q into e raised to minus t into t plus 1 dt. Directly this gets cancelled. So my answer becomes y into e raised to minus t into t plus 1 is equal to इसका इंटीग्रेशन होगा e raised to minus t upon minus 1 plus c. अब if I multiply this, so y is equal to, this will become e raised to minus t upon e raised to minus t upon t plus 1 plus c upon e raised to minus t into t plus 1. E raised to minus t gets cancelled. So minus 1 upon t plus 1 plus c e raised to t upon t plus 1, and this is your y ka value. So this is how you do your integrating factor when type 3 dy by dt plus py is equal to q, and type 4 dy by dx plus py is equal to q into y raised to n. Now this type there are going to be two y's.
दिस टाइप में देर आर गोइंग टू बी टू वाइज, एंड सिंस देर आर गोइंग टू बी टू वाइज थोड़ा चैलेंज अलग होगा. Okay, they are going to be two y's here, so you have to be a little careful. My question is dy by dx minus xy is equal to x cube y square. Dy by dx minus xy is equal to x cube y square. Okay, what I am going to do is I am going to divide by y square. ये देखो y raised to n से basically divide कर रहा हूँ. If I divide by y square, this will become 1 by y square dy by dx minus x upon y is equal to x cube. Now, if you carefully see, what I am going to take is let minus 1 upon y is equal to t. So 1 upon y square dy by dx is equal to dt by dx. वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी टी बाई डी एक्स. तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स प्लस टी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टी एक्स इज इक्वल टू, नाउ हियर यू हैव एक्स क्यूब. नाउ दिस बिकम्स टाइप 3. ओके, डी टी बाई डी एक्स इज प्लस टी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है. So p becomes t dy by dx plus py is equal to q. Py is equal to q. So I'll write it as, this is of the form dt by dx plus p dy by dx plus py is equal to q. So pt is equal to q. So p becomes x, q becomes x cube, and integrating factor will become e raised to integration p dx, which will become e raised to x square by 2, and y into e raised to x square by 2 is equal to integration q is x cube into e raised to x square by 2 dx. अब कुछ नहीं करना, आई विल टेक एक्स स्क्वायर बाई 2 को t ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे ले लेते हैं. अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, टेक एक्स स्क्वायर बाई 2 एच टी. अगर मैंने एक्स स्क्वायर बाई 2 को टी ले लिया, सो आई विल गेट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, देखो ई इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स डी एक्स. एक्स डी टी हो जाएगा. x square is nothing but 2t. So this will become y into e raised to x square by 2 is equal to integration. X square is 2t. So 2t into e raised to t into dt. This will become t raised to t minus e raised to t plus c. अब मुझे t का भी वैल्यू है और e raised to t का भी वैल्यू है. So this will become y into e raised to x square by 2. This is t is equal to 2 into x square by 2 into e raised to x square by 2 into e raised to x square by 2 plus c. You open the bracket and you will get the answer. A very 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 important sum. Okay, in the same way, if I do this, dy by dx minus 2 tan x into y is equal to minus y square tan raised to 4x. Again I will divide by minus y square. So this will become minus 1 by y square dy by dx minus y square से डिवाइड करेंगे तो 2 tan x upon y is equal to
tan raised to 4x. So I'll take 1 by y is equal to t minus 1 by y square dy by dx is equal to dt by dx. This will become dt by dx plus 2 tan x, यहाँ पे हम 1 by y को t ले लिया, so 2 tan x into t is equal to tan raised to 4x. Okay, now I will write t is equal to 2 tan x, q is equal to tan raised to 4x. So dy by dx, so this will become t into y नहीं रहेगा, t रहेगा, ये t है, गलती से y लिख दिया, इट इज गोइंग टू बी t. सो t यहाँ पे आएगा, t यहाँ पे आएगा, t यहाँ पे आएगा, t यहाँ पे आएगा, बिकॉज देखो dt बाई dx है, एंड यहाँ पे t आ जाएगा, एंड लास्ट में मैंने सब्स्टिट्यूट t का वैल्यू, प्लस लास्ट में मैंने सब्स्टिट्यूट t का, बिकॉज dt बाई dx हो गया, t इज नथिंग बट माइनस 1 बाई वाई. सो अरे जो जगह t ले लिया अपन, एक काम करो, इसको ना यहाँ पे t मत लो फिर, बिकॉज इट विल बिकम टू मच ऑफ कंफ्यूजन है. इसको m ले लो, ठीक, इसको m ले लो. सो दिस विल बिकम dm बाई dt. सो दिस विल बिकम, इसको m ले लो, यहाँ मुझे m m m m m m. सो दिस विल बिकम, हाँ, सो 2 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एम इंटू ई रेज टू माइनस एम, ई रेज टू एम, बराबर, टी रेज टू डी जाना. सो एम इंटू ई रेज टू एम, दिस विल बिकम डी एम, ये भी डी एम रहेगा. सो एम ई रेज टू एम माइनस ई रेज टू एम, एंड एम का वैल्यू इज एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस ई रेज टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे टी का वैल्यू इज 1 बाई माइनस 1 बाई वाई, so हो जाएगा माइनस 1 बाई वाई, दिस विल बिकम माइनस 1 बाई वाई. ओके, हियर. सो यहाँ पे हम लोग करेंगे, सो पी हो गया, क्यू हो गया. सो आई विल राइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू इंटीग्रेशन 2 tan x, which will become e raised to twice integration tan x, which will become e raised to twice ln mod of sec x, which will become e raised to ln mod of sec x square, which will become sec square x, sec square x. So this will become t into integrating factor is equal to integration q into integrating factor. Okay, t into integrating factor is equal to q into integrating factor dx. ठीक है, अब देखो t क्या रहेगा, t इज माइनस 1 बाई वाई, t इज 1 बाई वाई, 1 बाई वाई ले लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू q इज tan raised to 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx. अब कुछ नहीं करना है, आई विल टेक tan x as t, I will take tan x as t, so this will become sec square x dx is equal to dt. So 1 by y, this is sec square x is equal to integration t raised to 4 dt. चलिए t मत लो, t ले लिया ना हम लोग ने, इसको m ले लो, m dm. ठीक है, सो दिस विल बिकम m raised to 4 dm, which will become m raised to 5 upon 5 plus c 1 by y sec square x, and m का वैल्यू इज tan, तो 1 by y sec square x is equal to tan x
the whole raised to 5 upon 5 plus c. And now you can take sec square x on the right hand side and get the answer. Has everybody understood this? Chalo. The next topic is orthogonal trajectories. Orthogonal trajectories. Okay. एक ही एग्जाम्पल है, that's more than enough. Find family of curve orthogonal to x square plus y square is equal to a square. अब सुनो क्या करेंगे. Given data is x square plus y square is equal to a square. So 2x plus 2y by dy by dx is equal to 0. So 2y dy by dx is equal to minus 2x. Therefore, dy by dx is equal to minus x by y. dy by dx is equal to minus x by y. अब मैं क्या करूँगा, देखो ये dy by dx सेकेंड पार्ट इज माइनस 1 अपॉन dy by dx. और फिर ऑर्थोगोनल मतलब हो जाएगा dy by dx into dx by dy is equal to minus 1. So this will become dy by dx is equal to minus 1 upon x by y. Therefore dy by dx is equal to minus x by y, so y by x. Therefore integration dy upon y is equal to integration dx upon x. dx upon x. Therefore ln mod y is equal to ln mod x plus c. So ln mod y minus ln mod x is equal to c. ln mod y by x is equal to c. y by x is equal to e raised to c is equal to capital C. y is equal to cx. This is the family of curves. कुछ नहीं किया, ये सबसे important step है. ठीक है. इन अदर वर्ड्स अगर देखोगे तो dy by dx इज नथिंग बट, अगर यहाँ पे जाएगा, मुझे पता है कि ऑर्थोगोनल है तो dy by dx, ये है रूल मेरा, dy by dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy by dx. Substitute the value, you will get this, you integrate it, you will get the answer. Has everybody understood this? अब इसके बाद if obviously the next topic is your word problem, and the last topic, we'll be doing 3 to 4 word problems. Okay, we'll be doing 3 to word problems. So word problems are a very important part.
The population of a town increases at the rate proportional to the number of proportional to the population at that time. If the population increases from 40,000 to 60,000 in 40 years, what will be the population? In another 20 years. ठीक है. Now let's understand the question. Population of a town increases at the rate, मतलब dp by dt is proportional to p. Therefore dp by dt is equal to kp. Therefore dp by p is equal to k dt. Please try to understand the pattern. The same pattern is used for all the sums. dp by dt is equal to k. Therefore integration dp upon p is equal to k integration dt. So ln mod p is equal to kt plus c. Now this is the first part. अब population from 40 to 60, मतलब when t is equal to 0, population was 40,000. So therefore यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ln 40,000 is equal to 0 plus c. तो c का वैल्यू हो जाएगा ln 40,000. दिस इज c का वैल्यू, दैट इज ln 40,000. ओके. अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ln mod p इज इक्वल टू के टी प्लस ln 40,000. ठीक है. अब क्या बोला है कि 40 से 60,000 हो गया इन 40 ईयर्स. सो मैं बोलूँगा when t इज इक्वल टू 40 he becomes 60,000. Okay, so this will become ln mod 60,000 is equal to k into 40 plus ln mod 40,000. So ln of 60,000 upon 40,000 is equal to 40k. ये निकल गया पूरा 3 2. So 1 by 40 ln mod 3 by 2 is equal to k. Therefore ln mod p is equal to k का वैल्यू है मेरे पास, which is 1 by 40 into ln mod 3 by 2 into t plus ln mod 40,000. अब बाद में क्या बोला है, what is the population another 20 years, मतलब when t is equal to 60 t is equal to question mark and ln mod p is equal to t को अगर मैंने 60 ले लिया तो दिस विल बिकम 60 अपॉन 40 ln mod 3 by 2 प्लस ln 40,000. ओके. अब इसको अगर मैंने आगे सॉल्व किया मैंने तो ये हो जाएगा ln mod p is equal to ln 3 by 2 raised to 3 by 2 plus ln 40,000. Therefore ln mod p is equal to ln 3 by 2 root of 3 by 2 into 40,000. अब I forgot to give you ln 3 by 2. Root 3 by 2 का value is given to me. Root 3 by root 2 is equal to 1.5
4427, 1.2247. So if I substitute P will become 3 by 2, 1.2247 into 40,000, which will become 4 0 निकल जाएगा. So 3 by 2 into 12247 into 4, 3 2 times 1 2 times 2, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. So 12247 times 6, and whatever you do it, this is going to be your answer. So this is how we proceed. The skeleton of differential equation word problem is the same. सबसे पहले या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा. तुमको दो कांस्टेंट मिलेगा, एक के मिलेगा, इंटीग्रेट करने के बाद सी मिलेगा. सबसे पहला एम है के का वैल्यू निकालो, सी का निकालो. सबसे पहले तुमको सी का ही वैल्यू मिलेगा हमेशा, उसके बाद के का वैल्यू मिलेगा. सो वी कीप सब्स्टिट्यूटिंग बैक कि के का वैल्यू सी का वैल्यू डालते रहो, एंड लास्ट स्टेप में या तो जो वेरिएबल है वो दिया रहेगा या तो टाइम दिया रहेगा, दोनों में से एक पूछा रहेगा. फॉर एग्जाम्पल वो बोलेंगे कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल द पॉपुलेशन बिकम 73,000, इन हाउ मेनी ईयर्स, तो टी का वैल्यू निकालना है, तो टी का वैल्यू 60 रहेगा बेसिकली, 73482. सो अगर कभी कभी ऐसे देंगे कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल द पॉपुलेशन बिकम 73482, मतलब तुमको ये दिया है, तुमको टी निकालना है. सो वाइसे वर्सा हमेशा याद रखो, सबसे पहले सी का वैल्यू आएगा, फिर के का वैल्यू आएगा, फिर पॉपुलेशन दिया रहेगा या तो टाइम दिया रहेगा, दोनों में से एक मिसिंग रहेगा. वी हैव टू फाइंड दैट आउट. सो दिस इज द पॉपुलेशन प्रॉब्लम. अब अगर मैंने ये सेम क्वेश्चन लिया, द बैक्टीरिया प्रॉब्लम, ठीक है, तो नाउ यू अगेन रिमेंबर द फ्लो ऑफ द बैक्टीरिया इंक्रीजेस at the rate proportional to the number of bacteria present. If you understand, the tone is the same. Number of bacteria present, ठीक है. Original number is n. Okay, original number is n. Doubles in 3 hours. ठीक है, doubles in 3 hours. After how many hours it will be 4n? तो देखो डायरेक्ट प्रॉब्लम है ये एक्चुअली सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है. ओरिजिनल इज n, n है, 3 आवर्स में डबल हो जाएगा, तो n का डबल कितना आएगा 2n, तो 3 आवर्स में 2n हो गया. अब नेक्स्ट 3 आवर्स में कितना हो जाएगा 4n, तो आंसर क्या आना चाहिए, इट शुड बी 6. n है, डबल हो गया 2n, डबल हो गया 4n. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? n से 4n मतलब 2 बार डबल होएगा, ठीक है. बट ऑब्वियसली व्हेन आई सॉल्व इट, सबसे पहले आई विल टेक बैक्टीरिया. dB by dt is proportional to B. dB by dt is equal to kB. Therefore, dB upon B is equal to k dt. Let's integrate this. So this will become ln mod B is equal to kt plus C. Again, see, understand this. Huh? I'm just trying to make it easier for you. इसके बाद, can anyone tell me what will I do after this? What is the first step? बोलो. Now you guys tell me what should be the first step. इसके बाद क्या लिखना चाहिए? Time is 0. Very good. When t is equal to 0, bacteria will become n. So अगर मैंने substitute किया, तो this will become ln mod n is equal to 0 plus c. So I've got c का value, that is ln mod n. And if I substitute here, it will become ln mod b is equal to kt plus ln mod n. ये हो गया मेरा go to equation. जैसे मेरा go to equation हो गया, इसके बाद क्या करेंगे बताओ? It doubles in 3 hours. तो मतलब time is 3 and 2n. So this will become ln mod 2n is equal to 3k plus ln mod n, which will become ln 2n upon n is equal to 3k.
therefore ln mod 2 is equal to 3k. So k will become 1 by 3 ln mod 2, and when I substitute this here, this will become ln mod b is equal to t by 3 ln mod 2 plus ln mod n, and लास्ट में बोला है how many hours, t निकालना है and b will become 4n. So ln 4n is equal to t upon 3 ln mod 2 plus ln mod n. So this will become ln mod 4n upon n is equal to t by 3 ln mod 2. Therefore ln mod 4 is equal to ln mod 2 raised to t by 3. So 2, 4 को I can write 2 square. So ln mod 2 square is equal to ln mod 2 raised to t by 3. So this will become 2 is equal to t by 3, so t is equal to 6. Has everybody understood this? तो डायरेक्टली आ गया आंसर. तो एंट्रेंस में यू हैव द ट्रिक. यहाँ पर अगर देखोगे ना, सो ये कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है. ऑफ कोर्स आई वोंट नो द एग्जैक्ट नंबर 73482. अब यहाँ पे वो लोग जंबल अप करेंगे. योर ऑप्शन विल बी 73482, 74382, 78342, 72348. इट्स विल बी एनीथिंग, बहुत क्लोज रहेगा. बट तुम लोगों को पता है कि 70,000 में रहेगा तो स्टार्ट्स विद 7. तो इट कैन बी, यू हैव टू वेरी केयरफुल एंड पर्टिकुलर कि 3/2 का वैल्यू भी दिया है मुझे, यूजली नहीं देंगे या विल गिव यू टेंटेटिव आंसर. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि 3/2 आपको निकालना भी पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा. तो आई नो दैट रूट 3 अपॉन रूट 2 का वैल्यू इज दिस 1.2247. इन द सेम वे इट इज दिस पैटर्न. ठीक है, नेक्स्ट. चलो, दिस क्वेश्चन यू गाइज विल बी सॉल्विंग नाउ. बिस्मथ has half life of 5 days. Bismuth has half life of 5 days. A sample original has a mass of 800 mg. Find mass remaining after 30 days. Find mass remaining after 30 days. ठीक है, ये तुम लोग बताओगे. You guys will be solving it and we'll be discussing it. Okay, चलो start writing. Write down the question. Water at 100 degree cools in 10 minutes. Water at 100 degree cools in 10 minutes to 88 degree in a room temperature of 25 degrees. Water at 100 degrees cools in 10 minutes to 88 degree in a room temperature of 25 degree. These are all Celsius. Huh? Find the temperature of water after 20 minutes. Find the temperature of water after 20 minutes. Now, has half-life. Okay. If I differentiate, if I integrate this,
is the first value? What will I substitute first? What is the first value? When t is equal to 0, x is equal to 800. So see, therefore ln mod x is equal to minus kt plus ln mod 800. When t is equal to 5, so x will become 400. So ln 400 is equal to minus 5t. Okay, no, t is 5 na? Minus k into 5 plus ln 800. Ln 400 upon 800 is equal to minus 5k. So ln 2 is equal to 5k. Therefore k will become 1 upon 5 ln 2. Okay, I'll substitute here. So ln mod x is equal to minus t by 5 ln mod 2 plus ln mod 800. अब बोला है find the mass remaining after 30 days. So ln mod x is equal to minus 30 by 5 ln 2 plus ln mod 800 minus 6 plus ln 800, which will become ln 800 minus ln mod 2 raised to 6 ln 800 upon 64, 12.5 grams. ठीक है, this winds up differential.